हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। ये बायजूस से मिले हैं मुझे एसेट्स। दिस इज़ द राइटिंग पैड, ओके, एंड दिस इज़ द लैपटॉप। सो आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। सो दिस इज़ द पेन विच आई गॉट। इसकी हेल्प से हम इस पे लिखते हैं। सो इसमें लिखना एक बहुत ही बड़ी ट्रिक है। like this is the sheet which you are seeing in front of me. So मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी and I hope most of you who are working in Byjus तो आपको भी प्रॉब्लम होगी. So I thought of making this video so that it will be helpful for everyone. So don't look at these lines, okay? There are few dots, there are few lines. So if you will start writing by like here you're writing like this, right? See, this will be your handwriting. So don't do that. You just do one thing. आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा डॉट. सो जस्ट इस डॉट को लाइन पे रखिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग. See how beautifully you can write. I hope it's clear. This, and guys, please be confident, okay? Don't worry, I'm just writing anything. I'm not writing any meaningful sentence. So just focus on these lines, put this dot here and just start writing, and hold the pen very tightly and very confidently here. And after using, put it in this stand. So yes, hello everyone. So we will be talking about Byjus training. हम हमेशा इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात करते हैं. So I thought of making a video today on training. So this is the writing pad asset which we got. So in asset training part you will be given a task कि आपको एक पैराग्राफ इन लाइंस पे लिखना होता है. स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. मैंने 2-3 बार यूज़ किया. वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग देयर इन बायजूस एज एकेडमिक स्पेशलिस्ट. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जस्ट उन लाइंस को फोकस करके लिखिए, देन योर हैंड राइटिंग विल बी गुड. एक्चुअली यहाँ पे इस पैड पे लिखना इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेन एवर you will be taking the sessions, you will be taking the classes, so you need to use this board, right? So your handwriting should be good, and if you're just scribbling, you're just doing anything, the student will not understand anything. So here your grip should be good, your handwriting should be good. So this is the main, and it will be helpful when you're taking the classes. And there is, in your training session also, you have to submit some assignments also, in which you have to use this. And I hope this video is very helpful to you. जिन्होंने अभी तक बायजूस को ज्वाइन नहीं किया है, या ऑलरेडी जो लोग बायजूस में वर्किंग है, जिनके पास ऑफर लेटर आ चुका है, सो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो आप इस तरीके से इस पेन को, इस पैड को यूज़ कर सकते हैं. एंड सम ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट लैपटॉप. सो गाइज, दिस इज़ द लैपटॉप जो कि बायजूस ने दिया है. इसके स्पेसिफिकेशंस व्हाट आई विल टेल यू. नॉर्मल लैपटॉप है गाइज, एंड जैसा होना चाहिए यूज़ के लिए. So yeah, that's it. Okay then, thank you so much for the video. So yes, अगर मेरे माइंड में कोई आइडिया आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, then I'll be sharing with you all. Thank you so much.